শিৰণীত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী লোক নিহত। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শিৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত আজি পুৱা প্ৰায় ৮টা বজাত ২ নং জেংখাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। হাতীৰ গছকত সত্যনাৰায়ণ চৌহান নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু। কৃষি পথাৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁতেই এটি বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল চৌহানক। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এই পৰ্যন্ত চৌহানৰ মৃতদেহটি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই। বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে জিলা আয়ুক্তগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বটদ্ৰৱা লাইভ। उजानतर उना जे जे अरे न्याव तू भागो सरे भागो सरे गाइली ओ चेक के हो गाइली ए भागो सरे मुआ के गाइली कौन हो कौन रोल रे भाग लखन भाग तो आराम होते ऊपर जो अरे बुझिया जा चलो बड़ी सारा यार मेरा नाम दिलीप चौहान है और वो मेरा जीजा जी के भाई हैं। दोनों अमर जंखा में रहते हैं और हाथी का उत्पात है। तो हाथी का उत्पात तो बहुत दिनों से है। मान लीजिए बक्सा डोभी, पुराना बस्ती, कारी खाना, हुंडोली और बोगड़ी घाट, इसी तरह हाथी का उत्पात चलते रहा और कोई प्रशासन जो वन विभाग के लोग हैं उस पर कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है। और हम लोगों का मान लीजिए दिन पर दिन जो गन्ना की खेती है उसमें किसान हम लोग आदमी है, जहाँ भी खेती नहीं करना है, सुबह जाके खेती में काम करना है। वो सुबह गए थे खेती में काम करने के लिए, उनको 8 बजे के लपेट में हाथी को मारा। वन विभाग को खबर दिए हैं आप लोग? वन विभाग को खबर दिया गया है, उन्होंने आए हैं और जगह के देखने गए हैं, जगह पे जहाँ घटना स्थल पे गए हैं वो लोग। आज এই আমার খেৰণী রেঞ্জ অন্তৰত হাতীৰ বছৰে ধৰি উৎপাত চলি আছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ 2জন 3জন 4জন মানুহ হাতীয়ে মাৰে। কিন্তু ইয়াতে বন বিভাগতো স্পেশাল হাতী ৰখাবৰ কাৰণে, হাতী খেদাবৰ কাৰণে স্পেশাল এটা ফোর্স আনাটো গভৰ্ণমেণ্টে আজিলৈকে ফেলৰ হৈ আছে বা নিদিয়ে। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মানুহ মৰাৰ পিছত যে যি ব্যক্তি ঘৰৰ মানুহ সেইটো গাড়ী কৰিব লাগে, ডেড বডি ভেন নাই ইয়াত ডিফু হস্পিটেললৈকে। সেইটো কাৰণে ডেড বডি ভেনৰ কাৰণে প্ৰাইভেট ভেন কৰিব লাগে, পইচা খৰচ কৰিব লাগে। এইবিলাকো আমাৰ ইয়াৰ ডিচিটো কি কৰি আছে, বহি এইবিলাক পইচা ক'ত যায়, কি ডিচিয়ে খাই আছে না বেলেগে খায় না কি কৰে।